या वो से जो necessary functions है ना वो कौन से हैं. Then we'll talk about HacktoberFest कि there like a lot of जैसे कहते हैं ना कि हाइप मची हुई है ओपन सोर्स वर्ल्ड पे कि ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. We'll talk about that what is HacktoberFest, and then we'll see how to participate. And yes, अगर competition होता है तो end पे कुछ ना कुछ reward होता है. So they are giving away swags t-shirt, and we'll talk about that how you can get it. So I'll ask Arsalan if he is here to please start sharing your screen, and we can put you on the live stream. So it's not live stream, it's live meeting. Arsalan, if you're all right, just give me a second. Okay, no problem. Is my screen visible now? Not yet. I know you are. Okay, yes, now it's visible. All right. All right, everyone. So this session is about Git and GitHub. I will be talking about what exactly is Git and what is GitHub and what is the difference between these two and a lot of more things. So starting with who am I? But before that, so since you are more than 60 participants we have here, so what you need to do is that if you have any question, you need to go to these this link, which is on my slides.app.go.gl, and that whole link. So whenever you have any question, what you need to do is to go to that website and place your question there, because if you paste your question here in this chat, I don't think I will. I might miss that. So if you have any questions, so please go to that link and place your question there instead of putting that in the chat here. All right, so I will start with my introduction. So I am an MLH fellow. MLH is actually a community, which MLH stands for Major League Hacking. So they have this open source kind of open source, just like Google Summer of Code. They have like this own thing which is known as MLH Fellowship. So I was a part of that in summers, and I'm a GitHub Campus Expert, and by profession I am a full stack developer. So I am currently working with a company as a full stack developer, and apart from that I'm a DSC lead and a Microsoft student ambassador. And if anyone wants to connect with me, my Twitter, LinkedIn, or GitHub, all the platforms, I have just one username handle, which is khattakdev, and my portfolio website is also at khattak.dev. So if anyone wants to connect with me, please feel free to send me a request or connection on LinkedIn or Twitter. So starting with the agenda, so the agenda is we will start with the Git versus GitHub. So we will look at what is the difference between Git and GitHub. And then we will see how can we install Git, and then the most important thing is how the Git works actually. So the behind the scenes and the flow of the Git, which is most important thing of this whole session. And then we will move on to the practical things like creating your first repository, and I will also talk about what exactly is a repository. And once we create that, we will move on to our first commit. And after the first commit, we will move on to the GitHub. So we will open that github.com and make a repository there. And then we are going to attach these two repositories, the local repository and the GitHub repository, with each other. And once we do that, we will see how we can push and pull the code from the repository. So by push, I mean to upload your code or to send the code from your local disk to the website, to the GitHub. And by pull, I mean to download or fetch the code from the GitHub or the cloud to your local disk. And then we are going to talk about branches, which is another important thing in GitHub. And then we are going to see how actually you can create a first pull request. So this is the agenda. And now starting with Git and GitHub. So I know a lot of people are confused with Git and GitHub. Many people think that they are actually same thing, but they are not. So Git is actually a software. Git was developed in 2005,
and it is something that you need to install on your own system, on your PC, and it is a software that you need to download and install it just like any other software. And it is something that is known as a distributed version control. So version control is something which all the developers need. So to version control system is something that you need for if you are working in a team, like for example, a group of 20 or 10 or 20 people. So if you are working with a team, what the major issue you have is that, so for example, I am in your team, and we are working in the same team. So I am introducing a new feature, and you are working on a bug. So you are fixing a bug, and I'm introducing a new feature. So what happens is that I wrote some new code. You also wrote some. You also added some new lines. So now the issue is that we have to sync these two codes and make just one copy of that. So that is the main issue. Now, if you email me that code, or if I email you that code, then one of us have to take some time and see which changes that the other person made, and then sync them together and make a new version. So that is a major issue. So what Git helps you with is that it takes a code, it will take my code, and it will take your code, whoever make the changes, and it will sync that into just one code. So it's like it will have, like, I have my own folder, you have your own folder. So what Git will do is that take my folder and take your folder and merge them into just one single folder, so that all the changes that I did and you did, and like whoever is in the team that did it, that will be merged into just one single piece of code. So that is what Git helps with. So that is why Git is something extremely essential if you are a software developer, and it is something that you must know. Now coming to GitHub, so GitHub is actually based on Git, and since Git is a software that you need to install locally, GitHub is actually a web service. It is a website that you need to use for your hosting. So if you have your code, it is in your local disk, and you cannot show it to someone else. So the problem that the GitHub solves is that with the GitHub, you can upload your code to the cloud. By cloud, I mean to the GitHub. And then if you want to show it to someone else, for example, if you're going to any interview, or if you're going to any hackathon or something, you will be able to show your code to someone else by just sending them your GitHub repository. So that is how GitHub solves the issue. So for GitHub is actually a platform with which you can share your code and share with your teammates. So it is also something that you must use if you are in a university or college. So I would highly encourage you, if you are a student and you have some group assignments. So instead of like doing the conversation on WhatsApp or emails, I would encourage you to go and use the GitHub for those group assignments. So by that, you will also develop a skill of a skill that is used by professionals, industry, and which is the best practice in the industry. And moreover, it is also something that that will help you with syncing. So you will not take some time. You will not have to worry about like which code I need to change. Like for example, if you did some changes and I did some changes, then we have to put some efforts and see which changes we made and how to merge them together. And if you're using GitHub, by the help of Git, it will be merged together in just single file. So to quickly repeat what I just said, so Git is actually software that you need to install locally, and it is a version control system. And GitHub is a platform, web-based platform, which provides you cloud-based services, and on that cloud, you can host your code. So you can upload your code to GitHub, and then you can download it whenever you want it. So that is the main difference between Git and GitHub. Now, how exactly can you install Git? So to install Git, you need to go to this website if you are on Windows or Mac, which is get-scm.com. And if you're using Linux, you need to type this in your terminal, sudo space apt-get, and install. So that is how you can do it. And I will show you a demo in just a second. So this is the website which you need to visit if you want to install Git. If you visit this website, it actually detects your operating system, and
For me, I'm using Windows, so that's why it shows me for Windows. And if you're using Mac, it will detect it as well. So what you need to do is that you need to go to this website. I will place it in the chat as well. And download the Git. So it will be just a normal exe file in case of Windows. And you just need to install that. And the installation is pretty simple. It's just like auto install. You just need to tap on next, next, and next. And that will do the job. So that is how you need to install the Git. And without Git, you will not be able to use GitHub, because you will be able to use the GitHub, but you will not be able to upload your code to GitHub using the command line interface. So that is why this software is something extremely essential. So you need to install that. All right, so now moving on to the Git flow. So Git flow is extremely essential, and you need to understand the Git flow in order to be able to work with the Git. If you don't know this topic, you will have a lot of issues. You will have a lot of you will face a lot of challenges working with Git. So that is why I would say that this one slide is more important than all of the other slides. If you see here, we have like these different stages in Git. So the first one is the working directory, and then we have this staging area, and then the local repository, and then we have the remote repository. So the remote repository is the GitHub repository, and the local repository is your local disk. So we have two types of repository. One is the local repository, that is the folder that you have in your local disk, and the remote repository is something that you have on the GitHub. So there are like these several steps. So initially you have your working directory, which is your simple folder. So like the simple folder that you create by clicking on this new folder and then giving it a name, that is your working directory. So to move something to your local repository, so if your files are in this working directory, if you delete them or if you make some changes to them, they are not actually saved. So like Git actually helps you to keep a track of all the records, like all the changes that you made. But if your files all the changes are in the working directory, you do not have any access to that. Like the versions are not available to you. So what you need to do is that you need to move them to the staging area by doing this git add. And I will come back to this git add in the next slides and show you how exactly can you do that. So you need to move your files to this staging area. Once you do that, then you move that to the local repository. And to do that, you have to do this git commit. So now you have like these two phases, the staging area and then the local repository. So to move your files to local repository, you need to go through this staging area. So staging area is kind of checked that you first need to move them to staging area and then move to local repository. You cannot actually move them directly to the local repository. You need to go through the staging area first. So once you have your files in the local repository, then they are you will be able to revert back, like if you made some changes, for example, if you fix a bug and then you move them to your local repository, and then you introduced a new feature and move them to your local repository. Now you made two changes. One is fixing the bug, and the other one is introducing a new feature. Now you made these two changes. If you want, you can remove that bug fix if you want. Like even after introducing that new feature, you will be still able to remove that bug fix code from that file once you move them to local repository. So for that, so you need to move all your files to the local repository once you complete the thing. So so what you need to do is that you need to write your code, you need to fix the feature, like write the whole feature, and then move your code to the local repository. So once you move that to the local repository, now it's time to move that to your GitHub. So from the local repository, you need to upload that to your GitHub by using this git push command. So what git push do is that it sends you a file. It sends you a file to the GitHub, and each of the files that are available in the local repository, that will be sent to remote repository. But when you are doing this git push, and if you have some files in, for example, working directory, that will be ignored, and Git will not send those files to the remote repository.
So that is why sending those files to remote repository is something essential, and that is something that you must do. So this is the workflow of Git. So again, you have the working directory, and then you have the staging area, and from there you have to move to the local repository, and then you go to the remote repository. So that is how your code flow works in terms of Git. Again, if you have any question, you can send that here. I just send the link in the chat. So if you have any question, you can post that there. Now we understood how Git works, how the Git flow works. Now let's move on to the practical things and see how we can do all those things. So the first thing we need to do is to create a local repository. So again, if I move back, you have like these three things: the working directory, the staging area, and then the local repository. So what I'm going to do is that I'm going to create this local repository, and for that I have a command that I need to use. But before that, I have to do some more steps. So what you need to do is that you have to create a new folder on your desktop, wherever you prefer. So once you create your new folder, then you need to open that in your editor, like your whatever editor you use. So in my case, I'm going to use VS Code. So I have my editor open now, and if I show you my file path, you can see here I am in my desktop, and then this folder Hacktober. And if I do ls, you see I have nothing here, right? No, there are no files in this folder. So before I make a Git repository, what I'm going to do is that I'm going to just add a simple file, which is just a txt file, and write something here. Now I have just this one file that I created here. Now let's make a Git repository. And to make a Git repository, you need to write this command git init, which will initialize a Git repository. But make sure that you have the Git installed in your system, and to do that, you have to go to git-scm.com, and from there you have to download the Git. So now let's go and install this. Let's go and initialize the Git repository. So when I'm going to write the git init command, and pay close attention to this hello.txt. So if I do git init, and now it changed the color of this hello.txt, and you can also see this hue here. So I will come back to this in just a second. But before that, you can see this message: initialize empty Git repository in, and then the path. So what that means is that it actually created this .git folder. It created this .git folder in this repository there, but it is hidden because of this dot. That is why it is not here. So if I go to my desktop and HacktoberFest, you can see here it is available here. This file. So it is .git, and this was created just now by using this git init. So that is how you can initialize your repository. Now this is a local repository, but this file is in the stage of working directory. Now we need to take this file to the local repository. So for that, we have the commits. So moving back to the slides. Now what we need to do is that we have already made our repository, local repository. Now we need to make our first commit. So again, if I move back to the slides, you saw that we have the staging area and then the local repository. So that hello.txt is actually in this stage, this working directory. Now we need to move that to the staging area, and then we will move that to a local repository. So for that, I have this command git add space the file name, which will move the files to the staging area. And then I have another command, which is git commit -m space the message. So -m stands for the message, and then you add the message that you want to add for that specific commit. And you have also this other command, which is get status, which shows you which file is in which stage. So if they are in a staging area, that will show you that these files are in the staging area, and if they are already in the local repository, that will also show you that these files are in the local repository.
So now this U means that this is in the working directory and it needs to be moved to the staging area and then to the local repository. So what I'm going to do is that I am going to send this file to the staging area, and now this file is successfully moved to the staging area. And now you can see this, it says that A, which means that edit. And by edit, it means that this file is now in the staging area. Now, if I do git status, you can see this that changes to be committed hello.txt, which means that this file is already in the staging area and it needs to be committed before, so it needs to be committed to move it to the local repository. So what I'm going to do now is that I'm going to push that to the local repository. So I will use this first commit as a message and pay close attention again. So now you see the color is white again, and I don't see any alphabet here. Now if I do get status, you can see on nothing to commit, working to keep clean. That means that the other files in this folder are in the local repository. So this file is successfully moved to the local repository and we do not need to make any changes. Now this file is ready to push to the GitHub. So that is how you can move your, that is how you can create a new file, add some code, and move that to the repository, move that to the GitHub repository. Now we have a few questions here. So what is the difference between Visual Studio and Visual Studio Code? So Visual Studio Code is something, Visual Studio is in IDE, and Visual Studio Code is actually a editor, like a code editor. But Visual Studio Code, you can, if you want, you can use your VS Code, Visual Studio Code as in IDE as well, right? They have like a lot of extension. So if you want to switch, if you want to use VS Code as your IDE, you can also do that. So Visual Studio actually provides you a lot of built-in tools. But in case of Visual Studio Code, you have to install the extensions. So that is something, that is the difference between Visual Studio and Visual Studio Code. Another question is, I see you are using a Git bash as your default terminal. No, it is not. I don't think so. The difference is like there is not that much difference. I use Git bash because it is provided by VS Code, but I do not have any like personal choice. But in case of CMD, I try to avoid CMD because there are like some commands that is not, since like CMD is not a Unix based, that is why some commands are not supported. So for example, in Git bash, I can use commands like ls, which shows me all the files that is in this folder. But if I use this same command in CMD, that will be not supported. So that is why I try to use bash, because it has like more of Unix commands instead of, as compared to CMD. So that is why I prefer Git bash, and also it is also like the default for my VS Code. Apart from that, there are like no other personal reference or something. So now we have created our first commit. Now what we are going to do is that we are going to make a Git repository. So for that, let me just quickly make one change here. And for now, don't think about this change. Forget that. I will come back to this, what I did in the later on when we will talk about branches. But for now on, let's forget this. So now what we are going to do is that we are going to create our GitHub repository. So for that, we need to go to the GitHub. And if I zoom in, you can see this plus icon here. There you have to go for this new repository. Now, here you have to write all the details about your repository. So the first thing is to write your repository name. So I am going with HacktoberFest. And then you can write some description. And if you want to make it public, which means that it will be available to everyone in the universe. And if you want to make it private, that means that you have to add the people manually and send them an invitation. So let's make it public.
And then you have some other options if you want, but let's ignore that and create a repository. So now we have successfully created a GitHub repository, which is on this path. If you want, you can also visit here. So now it says like there are certain commands here, and we already saw these commands like git init, git commit, git add, and git commit. Now the next command we are going to do is that we are going to attach this GitHub repository with our local repository, and that is with this command, this one. So now we have successfully created our GitHub repository. So that is how you can create a GitHub repository, which is pretty simple. Now what we are going to do is that we are going to attach this local repository with the remote repository. So for that we have this simple command. It looks quite complex, but it is not. So each of these words has its own meaning. So the first word is the git, which we use for all the git instruction. The second one is remote, which means that this is a remote repository that we are going to add. And the third one is add, which means that I'm going to add this. So there are some commands like if you want to remove a remote repository, for that you have to use remove. And if you want to add a repository, for that you have to use add. So I am going to use git and add a remote repository. This is these three terms mean. And then you have this origin. So origin is not a keyword. That is a name of that repository. So if you want, you can go with some other name as well, like origin2 or something else. But I prefer to go with the origin. And then you have the remote repository, like the path of that remote repository. So that is this command that we are going to use now. So if I go back to the repository, and I have to copy this path because this is the path that that is a part of this repository, and this is the way that we identify that we are connecting with this repository. So I will copy that and move back to my my VS Code. So now let's add this repository with that other repository, with the remote repository. So for that, git remote add, and then the name like origin, or you can also do origin 2, 3, 4, or whatever you prefer. And then you have to paste the repository path. So and press enter. So now this has successfully added this repository with that repository. Like these two repositories, like this one and the GitHub repository, these two are now connected together. And if you want to confirm that, you can do that by typing git remote -v, and that gives me these two paths, like the first one and the second one. So this means that you can ignore that, but this fetch means that this repository is used to download the data, like download the code, and this repository is used to send the code. So basically these two repositories are the same repository, so it will send it will push or pull the code from the same repository. So now we have also linked the repository together, and which was pretty simple, like git remote add, and then the repository name, and then this repository. So what we are going to do now is that we will see how we can push or pull the code from the from the remote repository. So by that I mean that I'm going to let me open the file. Yeah, so I have this one file. So I'm going to send this file to the remote repository, to the repository that we just created on GitHub. And when I will do that, you will be able to see this file on your own systems as well. So for that, we have this command, git push origin. Origin is that same name which you use for the repository, and then the branch name. So for now, I will not talk about the branch because I have that in the next slides. So let's ignore that for now. So that is like git push repository name and the branch name. That is how you can push the code. And for the pull, you have git pull origin and then the repository name. So let's go back to the code and git push origin and main. So the main is this branch I am at this moment. And it takes some time sometimes.
now the branch, the code has successfully uploaded to the Git repository, GitHub repository. And now if I go back to this page and refresh it, you can see here I have this hello.txt. And you can also check that here as well. If you visit the page, visit the website, you will also see this hello.txt and that change that whatever I wrote in that file, you will also be able to see that as well. So that is how you can add something to the file, to the GitHub. So imagine we are all working in the same team, and this is the code that I just uploaded. Now, it is your job to get the code on your local system. So for now, let's imagine that this code was uploaded by someone else, and now my job is to pull that code to my local system and to fetch it, right? To use it in my local system. So for that, I'm going to add something here using my GitHub, so that I can pull that again. So let's make a new file here with the name new.txt. So I have created this file new.txt, and the reason for doing that here on this GitHub website is that I actually don't want to have this on my here in my local repository, and because I want to show you how you can fetch the code from this website. So you have this new.txt here, but not here. So what I'm going to do is that so imagine this new.txt was added by someone else, and now I want this file in my local disk. So for that, I have to pull this code, like fetch the code from this GitHub website to my local repository. So for that, we just saw that we have this git pull command. So I'm going back to my terminal, and I will use this command git pull origin and then the branch name. So it will just take a few seconds. And now you can see I have this new.txt here as well. And the file or the content that was added there. These changes are from GitHub directly. So that is how you can push the code by using git push, and to pull the code, you use git pull. So if you are working in a team, you can push the code using git push, and then someone else can pull that same code using git pull. So that is how you can keep the file in just one place on GitHub, and everyone else will be able to pull that or push that and make changes to that. And so I have a few questions here. So git remote add origin, that is something that you need to do just one time to give your local repository a hint, information that I have to push my code to this specific repository. So this command is actually you need to use just one time. And then you have to, for every time you want to push your code, you need to use git push, not git remote add. Git remote add is again a command that you need to use just one time, just to give your local repository information that my GitHub repository is this. Once you do that, you don't need to do that again. Second time, when you are pushing your code to the repository, you need to use git push, and that is git push space origin space the branch name. So that git push command is something that you need to use every single time when you want to push your code. This is actually a good question, that is it better to do it using Git Desktop or using terminal? So I prefer to use terminal, but both things are good. Both of them has some good points and like pros and cons. So the reason I prefer terminal is that terminal is free, terminal is faster than GUI, but something that I don't like about GitHub Desktop is that so some people use GitHub Desktop, some people use these other softwares, GUI-based softwares. So like everyone use their own preference, has their own preference. But something like if you use the terminal, so it is faster than the GUI,
And another reason is that you don't need to like go back and forth between these GitHub Desktop and these your code. And I have also noticed that when at least for me that sometimes the GitHub Desktop and like all the visuals that I don't like it doesn't looks good to me when like there is a huge repository and a code base. So I prefer using terminal, but if you want you can use GitHub Desktop. But the reason like the terminal is better than desktop in case of like speed. So terminal is faster than GitHub Desktop, but GitHub Desktop is more friendly than terminal. So if you don't want to memorize all the commands of the terminal, you can go for the GitHub Desktop. But if you want to like give them like more of a geek that feeling, you can go with the terminal. So it is up to you. So this other question is all right. So so for me, I am contributing on this website, on this project, which is next.js. This is actually off topic compared to my my workshop, but I will still answer this. So I'm contributing to this project that is next.js, which is a front-end technology, and I am obviously doing it just to help myself to improve it. So there are a few things that for which I contribute to. The first is that I get to know how to work. Like I get to know how to write better code, because whenever I make a pull request, and the maintainers review that code and write some comments on that. So if you contribute to the open source, you will be able to improve your code, and you will be able to improve your you will be able to learn new things from the other people. Like obviously, if you look at the other people code, you're obviously learning to you will obviously learn new things and like a new coding style, etc. So this is one thing that I for which I do. And again, the main purpose of the open source is that you just said that contributing to the betterment of the world, and that is exactly why people do that. Obviously, there is no other reason why people do this for the for the open source. Like, why would I do it for free? Yeah, but there are people who are like super cool and like I call them superheroes, because they do that for free, like without any cost. So that is why they do that. There are a lot of questions, but I will come back to all of these after I complete these just 2 slides. So now I am going to show you how you can create a new branches. We learned how we can create a local repository, how we can make our first commit, how we can create a GitHub repository, and how we can link those 2 together. And we also learn how we can push and pull the code from the remote repository. Now, let's talk about the branches. So branches is something extremely essential. So branches is something that, so if you're working with a large code base, you don't actually push that code to the main branch. And the reason for that is, for example, if your code has some flaw or some bug, and maybe if you are just internally and you just join that without any previous experience, join that company. So your seniors obviously don't want you to push the code without checking them. So for that reason, we have this branches. So with the branches, what branches does is that you made some code, you wrote some code, you added some extra feature or fixed some bug. So you will push that to a new branch in the repository. So that is like making a new folder. And that new branch will be checked by your seniors or whoever are maintainers of that open source project. And then once they review that, then they will merge that to the main code. So for that, you have the branches. Like you create a new, you create the code, you write the code and make a new folder of that. And the maintainer or the senior or whoever you call, whoever there is, that will check that folder. And if everything is working fine, he will merge that folder, she will merge that folder with the main folder. So that is how branches helps us.
So what we are going to do is that we are going to create a new branch and see how it works. And we are also doing the first pull request as well after the branches. So let's go to the code. And for the branches, we have these two commands, right? The git branch and the branch name that will create a local branch. And then you have to move to that branch as well. And to move there, you have to use this get checkout space the branch name. So with the get checkout, you actually move to that branch. It is like navigating from one folder to another folder. And if you don't want to use these two commands, I mean, if you're lazy enough, you can just use this shorthand, which is get checkout -b and then the branch name. So if what it does is that it actually creates the branch and also move you to that branch. So let's go with these two commands. So git branch and let's name it test. Now, if I want to check how many branches I have, I can do that by git branch. And you can see I have this main branch, this master branch, and this test branch. And I am, at this moment, I'm in the main branch. And you can also see that from here as well. Now, if I want to switch to the test branch, I will do git checkout test. And that will switch me to the test branch. And you can also see now it says test. Now let's make some changes here, maybe in the new file. So these changes are in test branch. I made some changes, and now this is in the working repository, and I need to send this to the local repository. So for that, I'm again going to do git add and new.txt. Let's also change something here as well, because I'm going to show you something else. This is also. Now we have like these two files which we need to send to local repository. So one way of doing that is to adding these new.txt, hello.txt one by one. But if you don't find that, for example, if you have like 5 to 6 files, what you can do is that instead of like writing these names, you can use just this dot, and by this dot, it will actually send all the files that is in the working directory to the staging area. So that will send all the files to the staging area, and now you will be able to see in just a few seconds. So yeah, it actually moved those files. You can see it here. These files need to be now committed. So now it's time to commit those files. So for that, hit commit -m and let's name it fix bug. Now we committed the file, and now it's time to again to push those files. So git push origin and then the branch name. So since I am in this test branch and I also want to move these files to the test on GitHub, so git push origin test. And it will take a few seconds, and the files are moved. Now let's go back to the GitHub repository. And then you can see here, it says that test had recent pushes less than a minute ago, and it asked me if I want to make a pull request. And here, if I refresh the page, you can actually see all the branches here. Oops. So in the if I open this, you can see I have this main, which is default, and this test branch. So I have my code. I wrote my code. Right, for example, I fixed a bug, and I also pushed that to my GitHub. But this code that I pushed is in another folder, is in another branch, and this is my stable branch. This is the branch that I used for the development. So now the job of the maintainer is to merge this with the main branch. But for that, I have to open a pull request. So now we learned how to create a branch and how to upload that branch. Now the time is to create the first pull request. So now you can see here, it says this message, compare and pull request, and you can also create a new pull request with this pull request as well. So I will do this from here. Let's go to the pull request, and there you can tap on this new pull request. So this is something you can do on the GUI.
there is no command on the CLI that you can use to create a new pull request. So here you have the base branch to which you want to merge the code, and here you have the code from the branch from which you want to merge the code. So I want to move my code from test to the main branch. And then here you can see all the changes here. So these are the changes that I added, these files, and I just need to create a pull request. And I have to add the title and leave a comment. So I will ignore the comments for now and create a pull request. So now this pull request was successfully created. And since I am the maintainer of this repository, so I can also merge the pull request. So I will also merge it quickly just to show you how you can see the changes. So before that, let me show you these files. So take a look at this. So I am in the main branch, and these branches doesn't contain those changes here. But if I merge the request, if I merge my changes, and now if I refresh this code, you can see here I have these changes here as well. And if I refresh this page, you will also see I have these changes here as well. So that is how you can create your pull request and move that there. All right, so let's take an overview, and then I will get back to the questions. So we learned how we can initialize a new repository by git init, and then how we can add the files to the staging area by git add space the file name or the dot operator to add all the files to the staging. And then we need to commit those files by git commit -m space message. And we can also check the status of the files by using git status. And we can push or pull the code using this git push or git pull. If anyone wants to take a screenshot, please do. We learn how we can create, how we can push the code and how we can pull the code, and how we can create a new branch and move to that branch, or how we can use the shorthand for the branches, which is git checkout -p. So this was all about the basics of GitHub and Git. And now let's move to the questions and see. So how can I delete a file from a Git repository? So if it is a local repository, what you need to do is that you need to go to that repository. So for example, here, what I can do is that I can simply delete this file. And now if I do my status, you can see here I have something that I need to commit. Just a second. Oops, my VS Code is hanged, but when you delete the file from here, what you need to do is that you need to also commit that. Just like when you add a new file, you need to commit that. So when you remove a file, you also need to commit that. For some reason, my VS Code is hanged, so that is why I cannot show you how exactly can you do that. All right. The next question is, what about git request pull p start URL? So this is more of a like advanced command, so that you can use if you want to. I'm not sure if this command is actually correct. Maybe there is a typo, but if that is that is the right command. So what it does is that it pulls the code, but from from some certain point. So actually what happens is that when you push the code, when you make a commit, Git actually assign each commit a specific hash code. So each of the commit has their own hash code, and I will show you that here. So if so I have like this file removed, so I need to commit that. So let's commit that
quickly. Now I actually made these 3 commits here, and now if I do git log, that actually give me logs here. So if you see here, these are the commits that I did. First commit and then create a new .txt, fix bug, and remove file. And all of those files have like these hash code, and these are like unique. So this hash code is different from all the rest of the hash code. So you can actually use these hash code, like let's make it starting and use another one for the ending, and then it will that command will just take those specific commits and download it for you. So for that you have this request pull. How you can delete a branch? So if you want to do it on the GitHub repository, that is pretty simple. So you need to just go to view all branches, and from there you can tap on this this dustbin icon. So that will actually remove it. So you can see it just removed it, and that is how you can do that on the GitHub repository. And if you want to do that here in the code, so I have like these 3 command branches. So let me remove the master branch. So git branch -d, for which means to remove, and master. And now if I do git branch, it removed the master branch. So again, the command is -d, git branch -d, or to remove the -d means delete, and then the branch name. So that is how you can delete the branch on the local repository. What is the difference between GitHub and GitLab? So both are the platform for hosting your webs, for hosting your code. So there are like not just GitHub, but like there are a lot of platforms that you can use for hosting your cloud, like hosting your code. So just like there are a lot of open the search engines like Google, Bing, and DuckDuckGo, and a lot of many. In the same way, there are a lot of platforms that you can use to host your code. So we have GitHub, GitLab, Bitbucket. So that is the difference. So like GitLab is also another code sharing platform. So how to undo last GitHub? So this is something that oftentimes I confuse myself with, and I confuse it, and I actually whenever I want to go back to the last commit, I actually Google it every single time. But the command is git revert, and which reverts back to the commit. But you have to actually pass some other options as well. So I guess it is something git head. And now you can see I have now this new.txt file again. So this file was previously deleted, and I made a commit. And now by doing this git revert, I went back to the previous commit, and now I again have this new.txt. But now you have to again commit this, like git add and git commit restore new.txt. Now if I check my logs, you can see I removed a file and then I restored it again. So that is how you can move back to the previous commit. So I have studied this. This question is like, what is the difference between get fetch and get pull? So get fetch is something that, so I'm not exactly sure, but what I assume is that, so get pull actually
pull the code from the remote repository. Like if it checks for the changes, if there is any changes in the remote repository, and it take those changes and download it for you. What Git fetch does is that it just checks for the changes if there is, and that's all. So Git pull actually do two things, like Git put and Git fetch, and also download that code for you. So that is what I think. But again, I would prefer you to Google that, because I am not exactly sure if that is how you can do that. If that is what it is. So create a new branch. For the branch, you have this code. Like to create a new branch, you need to go to the git branch space the branch name, and then once you do that, it will create a new branch. Just like if you right click on your Windows and tap on this new folder, that creates you a new folder, and then you have to move to that folder as well. So to move to that branch, you have to do this git checkout space the branch name. And if you don't want to use these two commands, you can go with this just one command, which is git checkout -b and then the branch name. So that is how you can create a branch. I will also show that to you here as well. So git checkout -b, and let's name it your. So now you can see I am on this Fahad branch, and this branch was created just now. So that is how you can create a new branch and also move to that branch. What would you use to view the commit trees and stuff like that? So in CLI, in the command line, you don't have like those commit trees. For that, you have the GitHub, like the GUI, but you have something else, which is this git log. So it actually tells you all the logs, all the commits that everyone made. So starting from here, so this is the last commit that I made, which is restore new.txt. It has the author, the time, and the hash code, and then you have this next one, and so on. So this is so the command to get that is git log. So you have this, but if you want to have like those other things, like the trees and all those stuff, for that you need to use GUI. That is not available here in this command line interface. So this is another good question that he used as git push -f origin, but someone recommended him not to use force-f every time any specifically. So the reason for that is sometimes so GitHub actually checks for the hash codes whenever you are pushing or whenever you git push or git pull. So the reason for not doing the force-f is that sometimes there are like unmatched history in your local repository, in the remote repository. So for that unmatched history, there might be some issues when you are doing that. So unless you don't know what exactly you are doing, please avoid git force-f. But if you know what exactly you are doing, like sometimes it happens that the repository history are not matched. So there are some cases like that, and for that you can use that. But I would also recommend you to avoid that unless you unless you know what exactly you are doing. So it is used that to avoid the unmatched history and still merge the commits. So if you have like unmatched history, Git will actually like stop you from doing the merge or pushing the code or git pull. So avoid that as well. So I'm just taking 2 more questions and then I will stop. The question is how to create a subfolder in repository.
And what I have to do right in .readme file. So subfolder is pretty easy. So what you need to do is that you can right click a new folder and let's call it subfolder, and there you have to, like, let's name it again hello.txt. So now these files are also in the working repository, working directory, and we need to move them to the working local repository. So just like the normally you make the subfolders in the folders in your Windows or in the Mac. That is the same way you do that in the Git. So if I push that to the GitHub, that will show as a subfolder in the GitHub. And the second question was what you need to write in the GitHub repository, in the README file. So let me give you an example here. So this is an open source package that I created, and you can see here. So if you are a first-time visitor, if you go to this section here, it will give you a demo here, like how to use this, and just a one-line explanation, and how to install this, how to use this, and the author details and all the things. So these are all the things that you can put in your README file. So this README file is actually something that you can use to give first-time visitor an instruction on what this package is about, or what this repository is about, and how you can use this. So for that reason, you have this README file, and you can put there some basic explanation or some basic usage or installation or all those basic details. So for that reason, you have the README file. So I'm taking this last question because time is, I've spent too much time. So how will you know in a Git if a branch has already been merged into the master? So if you want to check that using your CLI, so what you can do is that, I'm actually not sure about how you can do that in your CLI, but what you can do is that go to your GitHub. So let me open the code here again. So we just recently moved this test changes to the main branch. So what you can do is that you can go to the new pull request, and let's do this test. So now you can see here, it says that there isn't anything to compare, which means that all the changes that is in the test is also in the main as well. So that is why, so either these two branches are like the same, like someone check out, like made this test branch from this main and didn't make any changes to this, or the second case is that someone made changes to this test and then you pull all the code to the main branch using the pull request. So one way of doing, like checking either the branch was recently merged, is that by going to the pull request and using this CLI. And I think in the GitHub you can do this git diff. I'm not exactly sure again, but let's see if this is an option. So let's add this code, and yep. So this in the CLI you can use this git space diff, and then the first branch and the second branch. So you can see here it says that all the details I have here. So that means that you can check if both a branch has the same exact same code, or it was merged recently or not. So that is how you can check that. So this was how you can check the difference. Now, there are a lot of more questions, and unfortunately, I cannot answer that at this point. So if you want me to answer that, you can connect with me on LinkedIn or Twitter. My handles are Khattak Dev. If you cannot find me, you can go to my
website, which is khattak.dev, and there I have my all the social media links there. So you can visit my LinkedIn or Twitter, and then you can message me. So I will get back to you there as well. All right, thank you everyone. This was about Git and GitHub and how to use it. I will hand it over to Hamza from here. Okay, thank you so very much, Arsalan. It was a really long and a detailed talk. ठीक है, तो जितनी आवाम अगर सो रही है तो प्लीज जाग लें, बिकॉज नाउ इज योर टाइम जिसके लिए हम वेट करते होते हैं कि भाई कुछ फायदा दो ना, कुछ फायदा बताओ. तो वी आर कमिंग बैक टू दैट टॉपिक. So let me just share my screen. Reading mode कहाँ से है? So if you have any question, you can ask. Okay, अच्छा मेरी टॉपिक क्वेश्चन होंगे एंड पे, बिकॉज आई डू नॉट हैव समथिंग लाइक स्लाइड्स जिस पे मैं क्वेश्चन जाके देखूंगा और यहाँ पे शेयर कर दूंगा. So it will be like a Q&A session at the end, जिसमें आपके जो क्वेश्चन हैं, जो कंफ्यूजन you can ask, और फिर मैं आपको ना सारे आंसर करूंगा. You can use the chat feature for that. So let me just share my screen. यहाँ से. So I guess my screen is up and running. If yes, please do let me know. और अगर नहीं तो तब भी बता दें. I guess it's being shared right now. Okay. So I think आप लोगों का fully idea हो गया what is GitHub and what is open source and how you can create pull requests, especially pull requests, because this talk is all around creating a pull request. ठीक हो गया. तो अब आपको basic functionalities का पता है, आपको पता है what is GitHub and how you can use it, what's the importance. वैसे एक question में बड़ा interesting लगा था, उसका आंसर मैं भी देना चाहूँगा, which was like why do people open source apart from for the betterment of the world. तो उसका आंसर मैं भी आपको बताऊंगा कि what is the power of GitHub. So let's start with HacktoberFest 2020 and it's powered by DigitalOcean. कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन there are a lot of people जिनको नहीं पता कि Hacktober क्या चीज़ है, क्योंकि this year it's being like exposed to a lot of people. तो वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं शायद यहाँ पे कोई expert लोग जा सकते हैं और beginners participate नहीं कर सकते, और इसकी minimum requirement क्या है, so on so forth, like बहुत सारी confusion है. So let's start. So what we'll be going through is that what is HacktoberFest. पहले हम देखेंगे HacktoberFest है क्या चीज़ भाई. ये तो पता लगे कंपटीशन है, ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या, वो सारा सीन. Then how to participate. Is there any registrations? कोई टीम रिक्वायर्ड है, मैं सोलो पार्टिसिपेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, so on so forth. And last thing is swags. Obviously competition है, कुछ तो मिलना चाहिए ना. So there are swags from HacktoberFest, हमारी तरफ से नहीं है, HacktoberFest की तरफ से. So about me, I'm the DSC Lead of Comsets University Islamabad, and I'm the CEO and founder of Flutter Islamabad community as well. And considering my tech stuff, I'm a Flutter developer. Right now, I'm into machine learning as well, and I'm also learning augmented reality, Firebase, Dart, Python, so on and so forth. And non-tech interests involved, I'm a writer, but I'm a technical writer on Medium, so you can follow me over there. And I'm a video editor. I do love books and games. And if you want to connect with me, I'm not that much lucky. जिस तरह सलान है कि उसको एक ही हैंडल मिला हुआ है, तो मेरे पास दो हैंडल है, ठीक है. तो you can connect with me on m-hamzashkeel और m_hamzashkeel. These two are same, और मैं बहुत आवारा हूँ तो मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा. You can just give it a try. So let's start our talk, which is what is HacktoberFest. So it's the celebration for open source at GitHub. ठीक है, अब celebration होती है तो भाई हर बंदा participate कर रहा होता है. That's the exact concept on HacktoberFest, that everyone is participating in HacktoberFest. There is no requirement कि जनाब आप बड़े एक्सपर्ट हों, ठीक है, आपने कुछ 6 प्रोजेक्ट ओपन सोर्स किए हों, ठीक है, या लेट्स से आप GitHub में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इवन इफ यू आर न्यू टू, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये पहली टॉक थी ना जिसमें आपको पता लगा अच्छा GitHub भी कुछ चीज़ है, तो यू कैन इवन पार्टिसिपेट इन दैट एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट. द स्टार्टिंग डेट इज 1 अक्टूबर टिल 31st, सॉरी 1 अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, एट्स फुल मंथ. तो इसमें कोई लेट होने वाली बात नहीं है कि लेट्स अगर आज 10-12 तारीख हो गई तो मैं लेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. आप 1-2 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं. Now what's the thing is that you have to make four pull requests, PRs. ठीक हो गया, जो भी अरसलान ने बड़ी डिटेल में समझाया कि आप कैसे बना सकते हैं, कमेंट करना, ऐड करना, देन पुल करना और पुश करना, सब कुछ. तो you have to make 4 PRs on any GitHub repos, ठीक है, but there are rules for that. ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप किसी बड़े बंदे की जाके रेपो के ऊपर एक छोटा सा बकवास सा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे, दैट्स नॉट अ चांस. तो दे आर रूल्स, हम उस पर बात करेंगे कि क्या रूल्स हैं, आपने किस चीज को जेन में रख के पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है.
और फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने PRs का काउंट चेक करना है HacktoberFest प्रोफाइल पे। वो मैं अभी आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। कि आप वहाँ यहाँ से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपके प्रोफाइल पे वो अपडेट हो जाएगा कि यू हैव क्रिएटेड पुल रिक्वेस्ट, अपना इतनी बड़ी डिटेल लिखी होगी वहाँ पे, ठीक है। एंड जब आप 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे और ये एक्सेप्ट हो जाएंगी तो यूल विन अ हैक्टोबर टी-शर्ट। बिलीव मी, सुपर कूल, अगर मिल जाए तो, ठीक है। हाउ टू पार्टिसिपेट, ये चीजें जो स्टेप्स हैं, आई विल शो यू द लाइव डेमो एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट बिकॉज थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोर्क अ गिटहब रिपोजिटरी। शायद देखेंगे फोर्क का मतलब क्या, इन शॉर्ट इज कॉपी पेस्ट। आप अपनी उस किसी और बंदे की रेपो को कॉपी करेंगे और अपने पास जाके फोर्क कर देंगे, सिंपल। देन क्लोन द रेपो। क्लोन आसान जुबान में जिस तरह अरसलान ने बताया कि यू हैव टू पुल द कोड, तो आप अपनी उसकी पूरी रिपोजिटरी को अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में पुल करेंगे। देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेक सम चेंजेस, क्योंकि अगर आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कोड में चेंज होना लाजमी है, कोड के अंदर कुछ चेंज किया हो। एंड देयर इज अ ब्रैकेट में नॉट अ स्पैम। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लिखा हुआ था वेलकम टू माय गिटहब प्रोफाइल, आपने उसको कर दिया वेलकम टू माय ब्यूटीफुल गिटहब प्रोफाइल। ऐसा कुछ नहीं करना। तो यू हैव टू मेक सम रियल चेंजेस इन दैट। देन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच फॉर दैट रेपो, वो भी आपने टॉक में देख लिया। तो आई गेस नाउ इट ऑल मेकिंग सेंस, राइट, कि हमने गिटहब की टॉक पहले रख दी ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों को कौन कौन से फंक्शन इसमें आने चाहिए, कौन कौन से फंक्शन रिक्वायर्ड होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। देन यू हैव टू पुश द कोड एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। आपने कोड वहाँ अपने एक बंदे की रिपोजिटरी को कॉपी करना है, उस पर डाउनलोड करना है, चेंजेस बनानी है, अपलोड करना है और उसको बंदे को पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देनी है कि भाई ये मैंने चेंज किया है एंड इसको एक्सेप्ट कर लें ठीक है। एंड देन वो दैट्स इट। ये आपने करना है और ये आपने 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है and at the end we will have a HacktoberFest t-shirt. So now let's get together. It's not get together, it's get together. बड़ा सोचे और नाम रखा था वैसे। तो just give me second ताकि मैं जो है ना, पर मेरी इतनी सी टॉक थी, ठीक है। मेन गेम मेरी जो लाइव उस पे है कि मैं आपको करके दिखाऊं, क्योंकि मोस्टली लोग पजल हो जाते हैं कि यार इस रेपो पे मैं कर सकता हूँ, अच्छा इस पे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्या करूँगा। तो अभी हम उस चीज़ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शेयर माई होल स्क्रीन विद यू गाइस, ताकि ना मुझे बार बार मसला ना हो। Your entire screen. So do let me know when my screen is up and running. तो आप लोगों को अपनी शक्लें ही नजर आएंगी और तो कुछ नजर नहीं आएगा। It's here. Okay, great. So first thing first, आपने क्या करना है कि आपने जाना है HacktoberFest की साइट पे, which is this HacktoberFest.digitalocean.com। मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ ऐसे। और जब आप यहाँ पर आएंगे जनाब तो आपको एक बड़ी प्यारी साइट मिलेगी, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट ऐसे होगी, लेकिन क्योंकि मुझे डार्क मोड पसंद है तो मैंने डार्क मोड पे इनेबल किया हुआ है। और ये आप लोगों के स्वैग हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप इनकी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं जिसमें उन्होंने वीडियोस बताई हुई हैं, सब कुछ तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, इवेंट होता क्या, इसमें रूल्स क्या हैं, और ये रेपोज जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपकी हेल्प के लिए दी है, मतलब बड़े तरीके से मैनेज किया हुआ, कोई मजाक नहीं है। तो हम आते हैं काम की बात पे। वो चीज़ ये है कि आप क्लिक करेंगे स्टार्ट हैकिंग पे, एंड आई गेस मेरी शायद प्रोफाइल ऑलरेडी लॉग इन है, नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा और आप उसको करेंगे साइन इन विद गिटहब। वन थिंग टू मेक श्योर, हैकटोबर इज ओनली फॉर गिटहब, ठीक है। कोई और ओपन सोर्स अगर कोई है भी तो उस पर ये काउंट नहीं होगा, ये आपका इस पे काउंट होगा। तो पहला स्टेप ये करना है, यहाँ पे आगे प्रोफाइल बनाए, और प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने साइन इन विद गिटहब करना है और आपको ये सब कुछ दे देगा। ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी बिकॉज मैं 1-2 दिन पहले काम स्टार्ट कर दिया था। आप लोग यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक होगा और आपका इसको चार्ज होगा, यहाँ पे लिखा होगा 0 of 4 पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। नाउ योर फर्स्ट स्टेप इज डन। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके लिए जनाब एक रूल है जो कि गिटहब ने अभी रिसेंटली अपडेट किया है टू अवॉइड द स्पैम्स। अभी हुआ ये था कि एक इंडियन यूट्यूबर ने जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, जिस तरह मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ना, तो उस बेचारे ने गलती कर दी कि उसने एक छोटे से रीडमी के अंदर चेंज करके पुल रिक्वेस्ट करके दिखा दिया लोगों को कैसे आपने पुल रिक्वेस्ट करनी है। तो अवाम लकीर की फकीर, वो उन्होंने पूरे गिटहब पे और कुछ नहीं किया, सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस कर रहे हैं। जो मैंने एग्जांपल नहीं दी, वेलकम टू माय गिटहब प्रोफाइल को वेलकम टू माय ब्यूटीफुल गिटहब प्रोफाइल। फिर एक और नवाब साहब आते हैं, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल का बी बड़ा कर देते हैं, एक और आते हैं बी छोटा कर देते हैं। तो देयर वाज लाइक हेल ऑफ स्पैम ऑन गिटहब ड्यू टू दिस हैकटोबरफेस्ट। तो उन्होंने रूल्स थोड़े से चेंज कर दिए। उन्होंने बोल दिया कि भाईजान पहली चीज ये कि आपने सिर्फ उन्हीं गिटहब रिपोजिटरी पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है जो हैकटोबरफेस्ट को पार्टिसिपेट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका मतलब क्या है। और फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे उसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो मर्ज होना लाजमी है,
लेकिन हाँ उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो रिपोजिटरी ऑन कर रहा है ना बंदा, वो एक लेबल लगा दे कि भाई ये रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल वर्क, लेकिन मैं करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, जो एजेंडा वगैरह। अब देखो मैंने 2 पुल रिक्वेस्ट पहले की थी, ठीक है। एक मेरा एक दोस्त ही है, उसकी इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैंने की थी, एंड देन देयर इज वन ऑफ माय अदर पर्सन दैट आई नो, उसकी रेज्यूमे था, लाइव रेज्यूमे, उसका मैंने थोड़ी ट्रेनिंग की थी, एंड आई पुल द रिक्वेस्ट। इन दोनों एक्सेप्ट कर ली थी, दैट्स अनदर थिंग। अगर ये नहीं भी करते तो इट इज काउंटेड। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इन रिव्यू, ये जो लेजेंड दिया हुआ ना, मतलब अब मेरी रिक्वेस्ट काउंट हो गई है, एंड द हैकटोबर टीम विल रिव्यू इट, एंड जो भी इनका हिसाब किताब है। बट देयर इज वन थिंग, जो थर्ड रिक्वेस्ट है ये मैंने ओपन की थी, पुल रिक्वेस्ट ओपन की थी एक रिपोजिटरी पे। Although that repository was fully eligible for HacktoberFest, but I don't know क्या हुआ उनके साथ, उनकी रिपोजिटरी आर्काइव हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। तो ये देखो ये मेरी जो रिक्वेस्ट है ना, ये रिजेक्ट हो गया। इट्स नॉट रिजेक्टेड, बट इसका मतलब ये है कि देखो इन एलिजिबल रिपोजिटरी, तो मतलब जिस रिपोजिटरी पे मैंने पुल किया ना, वो इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया। लेट्स टॉक अबाउट कि पहले हमने करना क्या। अब ये आप गिटहब होगा जब आप इस तरह आएंगे, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड सर्च आपने सिर्फ ये टैग सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पे दुनिया जहान में जितनी रिपोजिटरी इस टाइम पे एलिजिबल है ना अक्टूबर फेस्ट के लिए, यहाँ पे शो हो जाएंगी। बट टू मेक श्योर कि यहाँ पे जिसके ऊपर ये टैग होगा ना अक्टूबर फेस्ट का, आपने उस पर जाना है। बाकी है नहीं है डजंट मैटर, लेकिन अक्टूबर फेस्ट का होता है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। और अब आप इसमें से वो रिपोजिटरी चूज करें जितना आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको HTML पे काम आता है तो HTML की रिपोजिटरी खोल लें, अगर आप पाइथन के एक्सपर्ट हैं उस पर खोल लें, जुपिटर नोटबुक पे खोल लें, इफ यू आर फ्लटर डेवलपर तो फ्लटर को सर्च कर लें, उसको खोल लें, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर हम कोई सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर ले लेना, लेट्स से हम ये इस पे जाते हैं, एलिस वंडर अक्टूबर फेस्ट जो भी इसका नाम है, और हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये देखो अक्टूबर फेस्ट स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट इज अक्टूबर, सारा उन्होंने डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो भी आपको अस्लान ने फुल डिटेल में समझाई है कि ब्रांच कैसे क्रिएट करनी है, कमेंट कैसे करना है। तो बजाय से आप इधर आगे यूट्यूब सर्च करें, कैसे आप लोगों को पता लग गया होगा क्या सीन है इसका, ठीक है। और देन ये देखो उन्होंने बताया, आप देखो कुछ रिपोजिटरी पे इस तरह सीन होएगा कि मर्जी है आपकी, आपने जो चेंज करना है करें, नहीं करना ना करें। कुछ रिपोजिटरीज ने ऐसे रीड में भी लिखा होगा कि यार आपने यही चेंज करना है, ठीक है। तो वो एक किस्म का डिसीजन लगता है यार, जब सारे एक ही चेंज कर रहे हैं तो एक फॉर्मेट बनता है, एक सेंस बनती है, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या बताया है कि यू हैव टू ऐड योर नेम इन द contributors.md फाइल। contributors.md कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जनाब इन्होंने कहा कि ये देखो आपने नेम इस फॉर्मेट में लिखना है, अपना नाम लिखना है, गिटहब रेपो का लिंक देना है, प्लेस, बायो, हु आर यू, एंड देन गिटहब। अच्छा ये भी गिटहब, चलो देखने का सीन है। एंड देन यू हैव टू ऐड अ प्रोफाइल, और प्रोफाइल अपने कहाँ ऐड करनी है, योर नेम.md फाइल में। योर नेम.md फाइल कहाँ पड़ी है, यहाँ पे आई गेस। अच्छा ये देखो ये वो फाइल है कंट्रीब्यूटर वाली। मतलब जब हम इसको डाउनलोड करेंगे ना, अभी देखते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे तो ऐसी कुछ चीज आएगी हमारे पास जिसमें ऑलरेडी काफी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपने यही काम करना है कि आपने एग्जैक्टली इसको ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है और सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर देनी है। लाइक अगर मैं हूँ तो मैं लिखूंगा मोहम्मद हमजा, प्लेस इस्लामाबाद पाकिस्तान, बायो में लिख दूंगा लेट्स से फ्लटर डेवलपर, और गिटहब पे मैं अपनी प्रोफाइल दे दूंगा, ठीक हो गया। और ये जो प्रोफाइल लिंक है ना, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने ऐसी अपनी प्रोफाइल की एक और मार्कडाउन फाइल बनानी है, और आई डोंट नो इसमें क्या लिखा हुआ है। ओह अच्छा ठीक है, तो इसमें आप ऐसे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो आई गेस आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया अपने कोड में चेंज क्या करनी है। मतलब आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि यार बड़ी कोई रॉकेट साइंस मैंने कोई बड़ा यूज केस बनाना है या मॉडल बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। देखो पहला स्टेप क्या था, ये देखो फॉर द गिटहब होस्टेड रिपोजिटरी। फॉर आपने कैसे करना है, ये रेपो मैंने खोल लिया, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है फॉर, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है, किसी और पे ना चले जाना, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या किसी में वो होगा, ठीक है। नॉट फॉर्किंग, तो मैंने कहा था ना कॉपी पेस्ट, देखो एक किस्म की लेजर प्रिंटर लगा हुआ है और ये उस चीज पे ना फॉर्क कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हमें पता कैसे लगेगा फॉर्क होगी। तो जनाब ये जो इसका एड्रेस है ना, ये आपके यूजर नेम के लिहाज से चेंज हो जाएगा। इसका ओरिजिनल एड्रेस देखो क्या था, एलिस वंडरलैंड हैक्टोबरफेस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, m-Hamza शीर हैक्टोबरफेस्ट, और ओरिजिनल एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। नो दिस इज फोर्थ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्लोन रेपो। अब क्लोन रेपो करने में जो सबसे शॉर्टेस्ट ये है कि आपके पास पहली चीज यार गिटहब जो गिट है इंस्टॉल होना चाहिए, वो मस्ट कंडीशन है टू वर्क ऑन गिटहब, वेदर यू आर वर्किंग फॉर हैक्टोबरफेस्ट और ओपन सोर्सिंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, गिट इज मस्ट। ये आपको लिंक मिलेगा जनाब, ने इसको कॉपी कर लेना है। एंड लेट्स से मैं जाता हूँ, अच्छा मैं यहाँ से इधर ही चले जाते हैं, और यहाँ पे जाके मैं ये टर्मिनल खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने अब रेपो को क्लोन करना है, तो द कमांड इज गिट क्लोन एंड यू हैव टू पेस्ट द कोड।
अनअलिग्न्ड। अब ये क्लोन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वहां पे जो सारा कोड इसका पड़ा हुआ था ना, ठहरो जरा, यहाँ पे ये सारी फाइल्स, आर्काइव, प्रोफाइल, स्क्रिप्ट्स, जितना कुछ भी लिखा हुआ है ये सारे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जितनी बड़ी रैप होगी उतना टाइम लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि छोटी ही हो ताकि टाइम ना लगे, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा, बिकॉज प्रोफाइल के अंदर ना शायद काफी ज्यादा फाइल्स पड़ी हैं। नहीं, ओहो गलत रिपोजिटरी पकड़ ली भाई। चले देखते हैं, अगर तो जल्दी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है, नहीं होती तो हम आगे वाला कोई सीन कर लेंगे। यहाँ पे तो वैसे कम ही फाइल्स हैं, बताइए कैसे इसकी इस पे टाइम लग जाएगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइल्स पड़ी हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जब ये, अच्छा ये जब हो जाएगा ना क्लोन, फॉर एग्जांपल लेट्स इट्स डाउनलोडेड, चलो इसको बंद कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होगा, हमने कोड को चेंज करना है, ठीक है। और द गुड न्यूज इज कि इस रेपो वाली बंदे ने या बंदी ने खुद बताया हुआ कि यार आपने मेरे कोड में क्या चेंज करनी है, ठीक है। तो हम वो कोड को चेंज करेंगे और फिर हम थोड़ा सा वो काम करेंगे जो अरसलान ने आपको बताया था कि ब्रांच क्रिएट करनी है, कोड का ऐड करना है, कमिट करना है और अपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे। तो अगर ये भाई जल्दी जल्दी डाउनलोड कर देना, जो कि मुझे लग रहा नहीं होगा, अगर ये ना हुआ तो मैं आपको एक और रिपोजिटरी का बता दूंगा जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं उस पर काम कर रहा था, ठीक है। मेरे ख्याल से यार ये जो है ना हम ले लेगा। अच्छा एनीवेज, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ मुझे यार, ताकि जब तक डाउनलोड होता है तो हम कुछ काम कर लें। ओए हो, अच्छा वेयर इट विल बी शेयर्ड, क्या चीज़ शेयर होगी ब्रो? अच्छा रिकॉर्डिंग चलना चाहिए। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि जब तक हमारी रेपो डाउनलोड होने में, अच्छा होगी, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं यार, बात देते हैं। अच्छा देखो हमारी रेपोजिटरी डाउनलोड हो गई है और ये देखो यहाँ पड़ी होगी, इसका नाम क्या था, HacktoberFest। इतनी ज़्यादा मैं डाउनलोड कर ली, मुझे कुछ नहीं पता था। अब ये देखो ये वो चीज़ है जो हमारे रेपो पे पड़ी हुई है, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हमारी वहाँ पे आ गई। अब जनाब हम चेंजेस पे जाते हैं कि चेंजेस क्या क्या करनी है। देखो उसने कहा है कि आपने ना अपना नाम एडिट करना है contributor.md फाइल में। तो मैं जाऊँगा इधर, ये है मेरी contributor.md फाइल को मैं ओपन करूँगा, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास VS कोड खुल जाएगा। और ये खुदाया अल्लाह, वो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाते हैं यार, बाद में डाउनलोड करेंगे। तो ये देखो हो जा, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कितने लोग हैक्टोबरफेस्ट में पार्टिसिपेट करें फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। पता कितनी लाइंस हैं? देखो 2429 लाइंस हैं। तो जस्ट इमेजिन कितने लोग पार्टिसिपेट करें। तो हम यही काम करेंगे, मैं इसको कह रहा हूँ जनाब कॉपी, ठीक है। यहाँ पे ला करूँगा मैं पेस्ट, यहाँ पे मेरा नाम ये नहीं आएगा, ठीक है, मेरा नाम आ जाएगा हमजा। और इसने बोला हुआ कि गिटहब का यूजर नेम, तो मैं इसको प्लेस कर दूंगा डॉट सॉरी m डैश हमजा से, और प्लेस लिख देंगे जनाब इस्लामाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। और हम यहाँ पे लिख देंगे Flutter developer and what else, Python ML, काफी। और मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मैं जरा मेरा अपना तरीका कार है तो कंफ्यूज मत होना, मैं ये इसका जो टर्मिनल है ना ये यूज नहीं करता, मैं गेट बैश यूज करता हूँ, ठीक है। चलो मैं ये वाला टर्मिनल यूज करता हूँ, ठीक है। मोस्टली लोग समझ, वो जो है ना जैसे असलान ने डेमोन्स्ट्रेट किया ना कि वो इसके टर्मिनल में काम करता है, वो यहाँ पे करता है ऐसे, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ इस जगह पे। तो अब देखो कमांड वही रन होगी, लेकिन आपको दिखाता हूँ। अब देखो कमांड क्या थी, चेक करने की फाइल में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, गेट स्टेटस, और सॉरी मैं स्टेपो में नहीं हूँ, हैक्टोबरफेस्ट आ गया, ठीक हो गया। नाउ बताएंगे गेट स्टेटस। तो ये देखो, आई होप वो नजर आ रहा होगा, अल्लाह करे नजर आ रहा हो, ये लिखा हुआ है मॉडिफाइड। मतलब आपको समझ आ गई ना कि कोड में चेंज हुआ हुआ है। तो अभी हमने एक स्टेप किया है उनकी रिपोजिटरी का। अगर हम दूसरा स्टेप देखें, उसमें उसने क्या बोला है कि आपने ऐड अ फाइल, मतलब योर नेम इन द प्रोफाइल डायरेक्टरी, उसका कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे, और यहाँ जाते हैं टू फर्स्ट में, हम जाएंगे प्रोफाइल में, यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल करेंगे, इसका नाम होगा मोहम्मद अपनी, चलो मोहम्मद अंडरस्कोर हमजा। txt फाइल नहीं है, मार्कडाउन फाइल होता है md, ठीक है। यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा और ये चीज को मैंने रिफिल कर देना बस ऐसे, ठीक है। चलो हाँ, तो कोई मजा, कुछ एग्जांपल देख लें, क्योंकि मुझे भी लग रहा है मैं गलत करने जा रहा हूँ। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं इसको कोड को बड़ा ना कर दूँ, रेफरेंस कहाँ गए यार, अच्छा मिस करो, मजा नहीं है, सहूलत है शायद, हाँ हो गया, ठीक है।
तो नहीं ओके अच्छा मोहम्मद अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया, देन उधर लोकेशन पूछी है, योर सिटी एंड कंट्री विल बी इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान, और एकेडमिक योर स्कूल, स्कूल तो नहीं हम यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एंड समथिंग यू इंटरेस्टेड, समथिंग यू लाइक, लोगों ने क्या लिखा है मुझे पता नहीं, यहाँ पे इन्होंने टेक इंटरेस्ट मांगा है क्या, और मैथमेटिक्स, वाह क्या बंदा है यार, मैथमेटिक्स पे यार so I'll go with Flutter and let's say Firebase, then machine learning, then article writing. ठीक है, मतलब काफी है चीजें. And inventory of my pillow. What is this? Restricted machine support vector machine. पता नहीं क्या बोला था. Let's say अभी कुछ ऐसे करते हैं. मैंने काम किया था Titanic survival मॉडल पे. देखो अच्छा यहाँ पे यार देखो मैं भी आपके सामने पहली दफा कर रहा हूँ ना, तो ये मैं देख देख कर रहा हूँ, तो आप कुछ और लिख देना कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने ऐसे कुछ लिखना है, और मैं लिख देता हूँ द होली कुरान ऐप जिसमें मैंने काम किया था, हमें भी ऐसा कुछ सीन होगा. एंड द थिंग इज माय प्रोजेक्ट में मैंने क्या दिया हुआ है, मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है. चलो तो गिटहब लिंक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है. लेट्स से माय प्रोजेक्ट मैं इसी के देते हैं यार, होली अंदर लिंक दे देते हैं. गिटहब लिंक को मैं दिखाता हूँ मेरी प्रोफाइल पे ना. अच्छा ये देखो यहाँ मैं काम कर रहा था. अब देखो इसमें ना कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैं कोई ऐसा स्टेप ले रहा हूँ जो इस कंपटीशन के लिए मस्ट है, नहीं. मैं वो स्टेप ले रहा हूँ जो उस बंदे ने जिसने रेपो बनाई थी, जिसमें मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट है यार ये आपने करना है, तो मैं वो कर रहा हूँ. मैं भी आपको एक दिखाता हूँ, एक रेपोजिटरी उन्होंने ओपन किया हुआ था कि आपने कोई भी चेंज करनी है अपार्ट फ्रॉम रीडमी में, मतलब ये नहीं क्योंकि जो नीचे रीडमी फाइल है डिटेल्स लिखी होती हैं, उसके अलावा आपने कहीं भी चेंज कर देनी है, तो लोगों ने छोटे छोटे कोड एडिट किया था. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सिलेक्शन सॉर्ट जो है डाटा स्ट्रक्चर उसका कोड अपलोड किया हुआ था, किसने पाइथन की स्क्रिप्ट अपलोड की थी, तो ऐसा कुछ किया था. ठीक है, तो अब ये बंदे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. देखो ये होली कुरान आया था, तो मैं यहाँ से लिंक उठाता हूँ और यहाँ पे गिटहब लिंक पेस्ट कर देते हैं. तो ये क्यों हुआ है ऐसे, गिटहब लिंक, अच्छा सॉरी ये हटेगा यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, लेट्स से Flutter एप्लीकेशन. ठीक है, देन योर नेम और प्रोफाइल लिंक वही सेम खाता हूँ हमजा, और यहाँ पे मैं इसी को सॉरी पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा और यहाँ से रिपोजिटरी का टेस्ट डालूंगा, हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखो मैंने एग्जैक्टली वो चीज़ बनाई जो मेरी रिक्वायरमेंट में थी. ठीक है, अब देखते हैं हमारा कोई इधर एक्स्ट्रा चीज़ रिक्वायर नहीं है. नहीं ये नहीं है, उसकी रेपो कहाँ है, हाँ ये था. ठीक है, तो जनाब हमने पहला स्टेप हमने कर दिया. उसने बोला कि अपनी नाम का एक कंट्रीब्यूटर में ऐड करें, देन फाइल बनाना चाहिए. एक और चीज़ भी ऑफ जावा क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट, add a hello world underscore username dot xx script to the scripts directory in language of your choice. Here's an example, console.log. ठीक है, तो अब ये भी उसने एक रिक्वायरमेंट मांगी है, तो वैसे जेएस मुझे सख्त नफरत है क्योंकि मुझे आती नहीं है. एंड Arsalan is the superman in this language. ठीक है, तो हम जाएंगे प्रोफाइल में, यहाँ पे वापस आएंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे. अच्छा ये देखो उन्होंने बोला है कि मतलब फाइल का नाम डॉट एक्स मतलब जेएस भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो आई गो विद द पाइथन. वो थोड़ा बहुत ओहो ये क्रिएट नहीं करना. लेट्स से उन्होंने क्या बोला है, हेलो वर्ल्ड सीरियसली हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड अंडरस्कोर आगे क्या है, कहाँ गया, अरे बड़ा लाभ होता है. हेलो वर्ल्ड यूजर नेम, जस्ट मैं कॉपी क्यों नहीं कर रहा, पागल में जाते रहता हूँ. यूजर नेम डॉट हम लिखेंगे फाइल और यूजर नेम मेरा आ जाएगा ठीक है. तो मेरी पाइथन की फाइल क्रिएट हो गई है, और अब मैं इसको करूँगा लाइन से खोल लेते हैं क्योंकि VS हमारा ऑलरेडी चीज़ चल रही है. और इसने बोला है कि आपने ऐसे मतलब ये इन्फॉर्मेशन लिख देनी है और बस यहाँ पे आपने कर देना है. तो मैं क्या करूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन से दी हुई है इसको कॉपी कर दूंगा. यहाँ पे लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं है, लैंग्वेज है पाइथन env, आई डोंट नो व्हाट इज env, तो मैं env को हटा देता हूँ. ओहो ओहो पत्थर नहीं, आई गेस ओ सॉरी, ठीक है इसको हमने चेंज नहीं करना ब्रो, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये उसकी इन्फॉर्मेशन है. आई एम सॉरी, ये देखो उसने अपना मतलब बताया मैंने कि ऑथर वगैरह जो है वो लिखी हुई है, हमने सिर्फ यहाँ पे अपना लिख देना है. तो इसमें जो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं. ठीक है, हेलो वर्ल्ड
और मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। पता नहीं चलाते इसमें कैसे, तो मुझे भूल गया। अच्छा सॉरी, इसमें ना कमेंट ऐसे नहीं करते, कमेंट किसी और तरीके से करते हैं। तो करो हाँ ऐसे, हम ये कमेंट ऐसे कर देंगे ताकि जो है ना ये खत्म हो जाए, एंड नाउ इट विल वर्क एंड यस। तो जनाब हमारी ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आते हैं उसकी अगली बात पे, बोनस हमें नहीं चाहिए, ठीक है, रेफरेंस लिंक जो भी है उसमें चाहिए। तो ठीक है, अब आप देखो आपको समझ आ गई, हमने फॉरवर्ड कर दी, हमने रेपो क्लोन किया, हमने कोड को चेंज कर दिया। नाउ इज द टाइम टू क्रिएट अ ब्रांच एंड टू कमिट इट, ठीक है। तो ये जो रेपो थी कहाँ क्लोन हुई थी मुझे जरा देखने दो, मैंने क्लोन की थी अपने प्रोफाइल पे, कहाँ हुई थी, ये देखो ये। तो मैं भी जाऊंगा अपने गेट पे वापस, फिर मैं लिखूंगा गेट स्टेटस। तो ये देखो अब कंट्रीब्यूटर मॉडिफाई हुआ है क्योंकि हमने अपना नाम एडिट किया है, नई प्रोफाइल आई हुई है और स्क्रिप्ट में भी एक नई प्रोफाइल आई हुई है। तो अब आसान वाली बात है, या आप गेट ये कर दें, वरना आप जो है ना ये भी कर सकते हैं कि आप सबका नाम लिख सकते हैं। तो गेट ऐड डॉट एंड देन गेट कमिट, और यहाँ मैं लिख दूंगा लेट्स से मोहम्मद, अच्छा एडिट, क्योंकि उसमें ना कमिट की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई। देखो कमिट मैसेज दिखा है बस, उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपने कमिट करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये सारी फाइल कमिट हो गई, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू क्रिएट अ ब्रांच, क्योंकि हम मास्टर में आप पुश करोगे आपको करने नहीं देगा, बोलेगा आपको एक्सेस नहीं है ऐसा, ठीक है। हमने किस पे पुश करना है, हमने एक एक्स्ट्रा ब्रांच बनाएंगे, उसको पुश करेंगे। तो ब्रांच बनाने का आपको बता दिया था, export.b, ब्रांच का नाम लेट्स से m-pd रख देते हैं, मेरा यूजर नेम आ जाएगा। ये देखो ब्रांच भी बन गई और मैं शिफ्ट भी कर गया। तो नाउ इज द टाइम कि हम इसको पुश करें, तो गेट पुश ओरिजिन m-pd, होपफुली कोई एरर ना है, वरना बहुत बेइज्जत हूंगा मैं यहाँ पे, आई लोगों को दिखा रहा हूँ कोड ही नहीं होता। आई होप ये पुश कर देगा। oh यस परफेक्ट। तो अब जो मैंने चेंजेस की थी ना वो किस पे पुश हो गई है, मेरी एक्स्ट्रा ब्रांच पे। तो अब मैं इधर आऊंगा तो ये देखो ये लिखा हुआ है दिस ब्रांच एलिस, ये देखो वी हैड अ रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो। मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा, ये सारी चीजें वो जो असलाना आपको करके दिखा चुके हैं। मैं सिर्फ आपको हैकटोबर फेस्ट के लिहाज से बता रहा हूँ कि अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना तो कैसे करना है। तो मैंने ये कर दिया, नाउ आई जस्ट क्रिएट एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन सिंपली यहाँ पे लिखूंगा, चलो वैसे ही लिखा रहने देते हैं, एडिट, यहाँ कर दूंगा एडिट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गाइड गिवन इन द readme.md, ठीक है, एंड आई जस्ट क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट। अब ये देखो ये हमारी तरफ से जनाब डन हो गया सारा सीन। मतलब जो हैकटोबर के रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से है ना वो आपकी सारी डन हो गई है कि यार आपने कोड करना है और वो सब कुछ करना है। आई डोंट नो ये ब्लॉक क्यों आ रहा है इसमें, जस्ट लुक इनटू द स्टेप कि क्या सीन है इसका भी, जो भी है, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग इस चीज को एक्सक्लूड करते हुए, लेट्स से आपने ये रेपो क्रिएट, आपने रेपो क्लोन की, आपने कोड को एडिट किया और आपने पुश कर दिया और कोड आपका पुश हो गया, ठीक है। और द थिंग इज कि अगर आप जाए ना इस पे, कहाँ गया वो, नहीं सॉरी इस पे, अब आई होप यहाँ पे ना ये यहाँ शो हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे ना तो ये देखो ये आपको यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। यू हैव सबमिटेड टू यहाँ फलां फलां फलां। अब क्या होगा कि अब जो मेंटेनर है ना जो इसको मेंटेन कर रहा है रेपो को, वो मेरी रिपोजिटरी को देखेगा और उस पर एक्सेप्ट का टैग लगाएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। दिस इज द स्टेप इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन हैकटोबर फेस्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ, इसके बाद अगली चीज पे जाते हैं, वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ताकि कंफ्यूजन हो। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टार्ट कमेंटिंग आउट नाउ। आई गेस बहुत ज्यादा शतरंज करने के लिए, लेकिन लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट नाउ। फिर हम जाते हैं कि अगर आपने रेपो होस्ट करनी है तो कैसे करनी है। वो बहुत ईजी सीन है, लाइक 5 मिनट का काम है। लेकिन जो मेन गेम थी वो यही थी कि इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन हैकटोबर फेस्ट दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू डू। अब इसके अलावा जिस मर्जी में पार्टिसिपेट करो, मैंने तो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए ऐसे कोई रेपो डाउनलोड कर लिया। तो आप देख सकते हो अगर आपको HTML आती है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, कोई और लैंग्वेज आती है, आप उसको कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस नहीं हैं, अगर हुए तो चलो मुझे आवाज़ आ रही कैसे, ना हुए तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा यहाँ तक ये सीन हो गया कि फिर पार्टिसिपेटिंग इन इट। ना तो क्वेश्चन है कि लेट्स अगर आप में से लोग हैं जिनको पता है मैं गिटहब पे मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि यार अगर मैं एक रेपो, लेट्स अगर आप दोस्त हैं सारे, ठीक है, 10-15 दोस्त हैं, आप कहते हैं हम जैसे किसी अननोन की जाके रेपो पे पार्टिसिपेट करें, पुल रिक्वेस्ट करें। हम एक रेपो अपनी बना लेते हैं, उसमें अगर हम पुल रिक्वेस्ट कर दें तो विल इट वर्क? यस इट विल वर्क, बट यू हैव टू फॉलो सम रूल्स अगेन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं करके दिखा रहा, जैसे आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सीन क्या है। अब देखो
सिंस बीइंग अ फ्लटर डेवलपर, फ्लटर की जब मैं सर्च कर रहा था ना तो रेपोज थे नहीं, अभी आ गए काफी ज्यादा, लेकिन पहले उस टाइम पे नहीं थे जब हैक्टोबर स्टार्ट हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना रेपो बना दी जाए जिसपे लोग पार्टिसिपेट कर लें। तो आई फॉलोड द डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने दी हुई थी अपने हैक्टोबर की अपडेट्स में, एंड आई क्रिएटेड अ रेपो फॉर फ्लटर डेवलपर। तो अगर आपने फ्लटर में कंट्रीब्यूट करना है तो आई हैव दिस रेपो ऑन माय प्रोफाइल विद द नेम ये हैक्टोबर फेस्ट। ये देखो इसमें हैक्टोबर फेस्ट का टैग भी है, और देखो उसमें 19 लोगों की पुल रिक्वेस्ट भी आई हुई है। इट मींस दैट 19 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन हैक्टोबर फेस्ट। उन्होंने यहाँ पे जो है ना पुल रिक्वेस्ट कर दिया। और द थिंग इज कि क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपने एक रेपो होस्ट करनी है हैक्टोबर फेस्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक? कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने एक रिपॉजिटरी यहाँ से क्रिएट करनी है। मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन है आई गेस। अच्छा चलो आते हैं इस बात में। कहाँ गया? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, अब एक रेपो आई। फॉर एग्जांपल मैं आप उसको नाम दे देते हो, लेट्स से पाइथन डेवलपर्स हैक्टोबर, ठीक है। और यहाँ दे देते हो क्रिएट योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट फॉर हैक्टोबर फेस्ट 2020, ठीक है। और पब्लिक रखना भाई, जरी सी बात है, ये ना कि आप पब्लिक करो ना प्राइवेट करो और देख रहे हो भाई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। तो हमने क्रिएट कर दी रेपो, रेपो क्रिएट होगी क्योंकि कोड नहीं है इसमें। तो जब आप कोड पुश करोगे तो कोड आ जाएगा। लेट्स से हमने ज्यूम करते हैं इसमें कोड आ चुका है, लेट्स से आपकी 5-6 फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपने सब कुछ कर लिया है। तो नेक्स्ट चीज वो है कि आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। और जिस तरह हैशटैग्स होते हैं ना, उसी तरह इस पे होता है टॉपिक्स, ठीक है। तो यार पता नहीं कहाँ से इसमें आते हैं, तो मैं देखने दो एक तरह। तो क्या वो ना, ये कौन सी रेपो है? ये वाली है। तो यहाँ से आएंगे, और अगर तो मैं ये क्रिएट करता हूँ यार, इसमें मेरे ख्याल फाइल कोई पड़ी नहीं है, वरना ना यहाँ पे शो हो जाता है। इसमें टॉपिक्स कहाँ से ऐड करने हैं जो कि अभी नहीं शो हो रहा है। सिक्योरिटी नोटिफिकेशन डिप्लॉयमेंट, यार आई थिंक ना अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आ जाता है यार, जनरली आता है। मैं आसान जुबान में बता देता हूँ आप लोगों को, छोड़ो मिस करो उसे। कि ये देखो जैसे मेरी ये रेपो थी ना जो कि गुम हो गई अभी इस टाइम पे। लेट मी जस्ट फाइंड इट अगेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी रेपो थी ना जो मैंने एलिजिबल की थी। फॉर एग्जांपल आपने रेपो क्रिएट किया, आपने उसके अंदर 10 फाइल फेंक दी, ठीक है। और वो फाइल जनाब इस तरह करके आ गई है इसके अंदर, ये आपकी रेपो थी, और यहाँ पे ऐसे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना दी थी। अब देखो मेरी रेपो थी ना, तो मैंने इसमें क्या रिक्वायरमेंट रखी थी कि यार आपने डाउनलोड करना है जो भी करना है, और आपने एक फाइल है, मतलब एक लिस्ट बनी हुई है जो कोडिंग करते हैं। कोडिंग सारे करते हो, अगर यहाँ आए हो तो पता ही होगा। तो एक लिस्ट मैंने बनाई हुई थी सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स की। तो मैंने बोला था आपने उस लिस्ट में जाकर अपना नाम एंटर करना है, अपना गिटहब यूजर नेम एंटर करना है, और इस तरह पार्टिसिपेंट के अंदर जाके ना आपने अपना यूजर नेम और अपनी फाइल एंटर करनी है। एक्जैक्टली वही थी जो भी हमने किया है, और उसमें आपने अपना नाम दे देना है, गिटहब यूजर नेम दे देना है, और कोई भी अच्छी कोटेशन पेस्ट कर देंगे। ये आपने करके आपने अपने पुल रिक्वेस्ट को इधर कर देना है, पुश कर देना, मैं उसे एक्सेप्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब देखो लोगों ने किया क्या, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। ये सारी पुल रिक्वेस्ट हैं जो हैक्टोबर फेस्ट में जो है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ यार ये जो यूसुफ जो भी इसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, लेट्स से ये बंदा नया था, ठीक है। इसने ये रिपो भी क्रिएट किया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा इसकी क्या नाम है पुल रिक्वेस्ट पे, और मैं ये सेटिंग्स में जाके यहाँ पे लेबल्स हैं, ये अक्टूबर फेस्ट का, अगर ये ना हुआ तो आप क्रिएट कर सकते हो खुद, यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन होता है। मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। अभी यहाँ सेलेक्ट हो गया ना, ये देखना भी ये शायद चला जाएगा यहाँ से, मेरा ख्याल है। अच्छा नहीं, बार बार ये को रिमूव हो गया, ठीक है। तो मैंने करना क्या है कि मैंने इसको रिमूव नहीं करना, मैंने उस बंदे की एलिजिबिलिटी बनानी है ना। तो मैं जाऊंगा अक्टूबर फेस्ट पे सेलेक्ट करूंगा, और जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब जो ऑनर है उसके बाद आएगा एडिट द फेस्ट, ठीक है। जब ये स्टेप कंप्लीट होगा ना मेरी तरफ से एज अ मेंटेनर, तो फिर आपकी यहाँ पे जाकर ना ये +1 हो जाएगा कि जनाब आपने जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी वो वहां पे एक्सेप्ट हो गई है। अब याद रखना कि यहाँ पे ना मैंने कोई वो नहीं किया, क्या बोलते हैं, मैंने इसका कोड मर्ज नहीं किया। देखो कोड मर्ज नहीं हुआ, सिर्फ ये टैग लगाया है। बस ये टैग लगेगा तो आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। सो सिमिलरली आपने 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है जो एक्सेप्ट हो, मर्ज होना डजंट मैटर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन याद रखना उन प्रोजेक्ट्स के अंदर टॉपिक लगाओ हैक्टोबर फेस्ट का, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो अपने रेपो की स्टोर्स करिए। उन्हें बता दिया कि उसके अंदर टॉपिक आना चाहिए। टॉपिक कहाँ से ऐड करते हैं आपको दिखा देता हूँ। टॉपिक ऐड करते हैं, जब आपकी रेपो बन जाएगी ना, तो ये देखो आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे ये सेटिंग में जाओगे तो ये देखो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ आप सर्च करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन, ये ऐसे टॉपिक आ जाएगा, फिर क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा। जैसे आपने अक्टूबर फेस्ट सर्च करना, यहाँ पे ऐड कर देना। मैंने सारे वो किए जो फ्लटर से रिलेटेड है, अक्टूबर से रिलेटेड मैंने ऐड कर दिए, और सेव करोगे तो यहाँ आ जाएंगे।
बस ये सीन था। तो अब अगर हम इसको रिव्यू करना चाहें तो फॉर्क कर दिया रेपो को, ठीक है, हमने क्लोन भी किया, हमने चेंजेस की, वो कंट्रीब्यूटर की पूरी एक फाइल बनाई थी और वो नाम एडिट किया था, पता नहीं क्या क्या। देन हमने एक ब्रांच बनाई जिसका नाम मैंने अपने यूजर नेम पे रख दिया था, हमने कोड को पुश किया और हमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। हमारी तरफ से डन हो गया, दुआएं मांगो वो बंदा एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इसका आसान हल यही है कि सारे मिल के अगर 8-10 दोस्त हो तो अच्छी सी कोई रेपोजिटरी बनाओ, ठीक है, पोस्ट कर ले एक बंदा, उसको एलिजिबल रखो, उसके लिए अक्टूबरफेस्ट के लिए अपनी पहली रिक्वेस्ट वहां क्रिएट कर लो, ठीक है। तो this is all from my side. If you have any question regarding Hacktoberfest, regarding GitHub, anything, वो मैं लेता हूँ। और उसके एंड मैंने एक क्वेश्चन आंसर देना यार, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैंने बोला इसको मैं जवाब दूंगा। तो मतलब इट्स नॉट लाइक हर बार नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मोस्टली लोग समझते हैं अक्टूबर बस ओपन सोर्स है, क्या है इसमें, मैं एनी टाइम जाया करता जाऊँ मैं इसमें ओपन सोर्स करूँ। जैसे अरसलान ने बताया कि अपनी प्रैक्टिस एक अच्छी होती है अगर आपका कोई और बंदा कोड रिव्यू कर रहा है, एंड द बेस्ट थिंग इज अगर वो एक्सपर्ट है तो, ठीक है। तो हम उस पर आते हैं, लेकिन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अक्टूबरफेस्ट मुझे बताओ जल्दी जल्दी। कहाँ गया मेरा आई एम नथिंग पोस्टिंग करने व्हाट गुड अरसलान जैसे कैन ओके आई गेस यू हैव द आंसर। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप जिंदगी में अभी जाकर अगर रैपो बना रहे हैं ना, सॉरी रैपो कह रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं गिटहब पे, तो आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि भाई कुछ ना कुछ पढ़ा हो, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। फ्रॉम द स्क्रैच आप, क्योंकि देखें हमने इसको ना वो मोस्टली टैग भी किया जाता है कि स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ ओपन सोर्स, तो मे बी ये आपका पहला स्टेप होगा कि जिससे आप जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ओपन सोर्स की दुनिया में, और आप इस तरह करके अपना इस पे स्टार्ट भी कर सकते हैं। सो आई वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो ठीक, नहीं तो मैं आपको एक छोटी सी चीज ऐसे ऑफ टॉपिक है लेकिन फिर भी बतानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन है ना, तो 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट 2 सेकंड 2 मिनट लगेंगे बताऊंगा। इफ एनी क्वेश्चन यस यू कैन आस्क, इफ नॉट देन मैं तब तक इसको जरा सही कर लूँ, मैंने बहुत चीजें खोली मुझे खुद नहीं पता। अच्छा इसमें देखने तो मुझे चलो देखते हैं इसके हसीना, बाद में आते हैं इसके ऊपर। ये हो गया, ये मुझे डिलीट करने दो, ये मेरे किसी काम की नहीं, मैंने ऐसे डिलीट कर दी। ओके, कैन यू पुल रिक्वेस्ट ऑन द सेम रेपो? यार आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने 2 पे किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। आई गेस यू हैव टू पुल रिक्वेस्ट ऑन 4 डिफरेंट रेपोज, तभी देखो उन्होंने टैग्स लगाए होते हैं। हेलो जरा मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने पुल की थी ना, शायद मैंने बंद कर दिया, उसके ऊपर टैग लगा हुआ था कि पुल योर फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर हैक्टोबरफेस्ट, ठीक है। तो आप एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक ही रेपो के ऊपर। मैंने 2 पे किया, 2 पे किया था, काउंट नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों, शायद हो सके मैं भी अपडेट के बाद, लेकिन एक 4 प्रोजेक्ट पे एक एक रिक्वेस्ट आपने क्रिएट करनी है, तो इस तरह कर सकते हैं। अब ये देखो, अब ये वहां लगी हुई है ना जो मतलब मेरे रेफर कर रही है, तो यहाँ से आएगा ऐसे करके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव? अगर नहीं है तो मैं अभी वो टॉपिक बताता हूँ। यार देयर वाज सम क्वेश्चन कि यार ओपन सोर्स क्यों करें हम, अगर मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइक इससे क्या फायदा है। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ यार, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन, आप कोई ऐप बनाओ ना, ठीक है, जो प्ले स्टोर पे चली जाए, लोग डाउनलोड कर लें, सब कुछ हो जाता है। ओपन सोर्स आई इन माय ओपिनियन टोटली मेरी साइड है, इसमें ऐसा मत समझेगा कि ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये ऑफिशियली ऐसी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे इस्लाम का एक्सपीरियंस था ना, इस साइड यार अपनी कोड प्रैक्टिस के लिए मैं ये करता हूँ, ठीक है, और मुझे पता लग जाता है कि मेरा कोड अगर कोई रिव्यू करेगा तो भाई गलतियां निकाल के बताएगा इसमें क्या है क्या नहीं, कमेंट्स आएंगे। इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ऑल यू नीड इज द रिव्यूज, ठीक है, क्योंकि एक डेवलपर को नहीं पता होता कि इसको यूजर किस परस्पेक्टिव से देखना है, ठीक है। तो जो मेन चीज है यार, देखो जस्ट अज्यूम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो अगर कोई फ्लटर पे काम कर रहे हैं ना तो उसको पता होगा फ्लटर ओपन सोर्स है, ठीक है, इट्स ए पॉजिटिव ऑन गिटहब, सॉरी ये मैंने सर्च कर दिया फ्लटर गिटहब, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सारी फ्लटर के सारा कोड वगैरह ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें मतलब लोगों की देखना है, पुल रिक्वेस्ट भी है, इश्यूज भी हैं सारे, मतलब दिस इज द फ्लटर दैट पीपल यूज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। सिमिलरली जो है ना, अगर आप रिसर्च करो ना, देखो आंसर फ्लो गिटहब, तो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पड़ी हुई हैं, ओपन सोर्स है। अब जस्ट इमेजिन कि आप इतने एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, यार मैं फ्लटर में इतना काम कर चुका हूँ, इतना एक्सपर्ट हूँ कि मुझे पता है फ्लटर टीम किस चीज पे काम कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनफैक्ट इश्यूज देखूंगा, देखो ना सारे इश्यूज यहाँ पे ना लोगों ने रिपोर्ट किए हैं कि भाई इसमें ये मसला है, ये मसला है, साला फलाना फलाना मसला है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिव्यू करूंगा, इसका कोड सही करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दूंगा। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका कोड फ्लटर में एक्सेप्ट हो जाए। फ्लटर में नहीं, आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, आप रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं, पाइटॉर्च पे काम कर रहे हो, टेंसरफ्लो पे काम कर रहे हो, और कोई भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी की फ्रेमवर्क है, जिस तरह अरसलान ने नेक्स्ट जेएस पे किया हुआ है। तो जस्ट इमेजिन कि आपका नेक्स्ट जेएस या नोड जेएस में कोड एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स दैट यू आर समथिंग, इट मीन्स कि दैट यस यू आर ए प्रोग्रामर। अब ये चीज जो है ना एम ही नहीं मिल जाती। आप जाके किसी ऐसे डेवलपर को बोलो यार मेरा कोड तो रिव्यू कर दे, पहली बार इतना टाइम भी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और एम ही बोल दे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन अब मैं ये चीज फ्लटर में करूँ कि यार फ्लटर फ्रेमवर्क में मेरा कोड गया हुआ, इट मीन्स कि वहां पे कोई ऐसी इशू है जो मैंने रिजॉल्व किया था और यहाँ पे। अब अगर मैं जॉब लेने जाऊँ, मैं चीज बोलूँ कि भाईजान आप लोगों के फ्रेमवर्क के अंदर मैंने एडिट किया हुआ, तो कैसे जॉब मिलेगी मुझे, ठीक है। तो ये बड़ी कंपनीज है ना, वो ये चीजें देखती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कोई भी कर लेता है, ये चीजें होती हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं। यार इस बंदे की ऐसी क्या चीज है। आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का जीडी या इमाद हसन नाम है, उनकी एक रेपोजिटरी है, मुझे अब इतना पता नहीं वेब टेक्नोलॉजी का, लेकिन दैट इज क्रोम लेस ऐसा कुछ उसका सीन था। तो वो जाकर रेपोजिटरी स्टार्स वगैरह देखना और देखना कहाँ कहाँ लोगों ने जो है ना उसको किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है। तो वहां से फिर जो है ना वो जीडी बने, और जीडी मजाक नहीं होता। तो ये ओपन सोर्स जो वर्ल्ड होता है ना, इसका सारा ये खाता होता है कि यू कैन पार्टिसिपेट ऑन एनी फ्रेमवर्क, एनी लाइब्रेरी दैट यू वांट। और ये चीज आपको बताती है आप कितने दूध में और कितने पानी में, ठीक है। तो अगर आपको इतनी समझ है प्रोग्रामिंग की, आप इतना ही कहते हो कि यार मैं बड़ा प्रोग्रामर हूँ या बड़ी प्रोग्रामर हूँ, तो आप जरा देखो ना कि आप किसी का इशू रिजॉल्व कर सकते हो, किसी का बग फिक्स कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो करो। और अगर वही किसी फ्रेमवर्क का, फ्लटर का या पाइटॉर्च का, तो इमेजिन वो अगर आपको एक्सेप्ट कर लें, तो भाई कितने फख्र की बात है कि जो दुनिया फ्रेमवर्क यूज कर रही है उसमें मेरा कोड पड़ा हुआ है। दिस इज द थिंग व्हाट पीपल लुक फॉर, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने ग्लिम्स दिखाया था, बिकॉज द टॉक इज जो 2 घंटे की हो चुकी है, हमारे 1.5 घंटे का टारगेट था। तो आई गेस वी शुड एंड नाउ। अगर किसी के पास क्वेश्चन है, इट्स द लास्ट मोमेंट, तो आई कैन आस्क, इफ नॉट देन thank you so very much for being here. Thank you all the DSC leads, all the people from various chapters, and everyone for being here and giving us your time. So there are no more questions. So this was it from my side. Thank you so very much, and Allah Hafiz.